नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। हमारी लड़ाई रंग ला रही है। अब यूट्यूब हमारे जिस चैनल को टर्मिनेट किया था यह कहते हुए कि हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, विज्ञान के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, हैरान हूं उसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के पॉडकास्ट जारी हैं जो वैक्सीन पर चर्चा कर रहा है। वहां के डॉक्टरों की प्रतिक्रिया को भी दिखा रहा है कि डॉक्टर वहां वैक्सीन पर क्या कह रहे हैं, एडवर्स इवेंट इफेक्ट पर क्या कह रहे हैं और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे क्या कह रहे हैं, लॉकडाउन पे क्या कह रहे हैं। लेकिन उनके वीडियो को, उनकी टिप्पणी को ये यूट्यूब चैनल टर्मिनेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है और वहां के माफिया के हाथों सरकार अगर समझौता किए हुए है, अपोजिशन खड़ी है, साइंटिस्ट खड़े हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं। लेकिन भारत की बेईमान सरकार, भारत की बेईमान मीडिया, भारत के बेईमान डॉक्टर्स, भारत के बेईमान रिसर्चर्स और भारत की सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने इन टेक जायंट्स के सामने हाथ खड़े कर दिए, घुटने टेक दिए। इन बेईमानों की वजह से ये टेक कंपनियां जो चाह रही है वो कर रही है। ये नियंत्रण करना चाहती है, ये कंट्रोल करना चाहती है हर चीज पे। और थर्ड वर्ल्ड के देश इनके एक आराम सा चारागाह है। इनको तो ये कुछ समझते नहीं है, और ये इसलिए नहीं समझते हैं कि ये करप्ट सरकार, ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी, ये करप्ट कुछ बेईमान करप्ट डॉक्टर्स की वजह से, कुछ बेईमानों की वजह से ये टेक जायंट्स आपको डिक्टेट करती है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एक एक कर भी हम वीडियो दिखाएंगे, हम दिखा रहे हैं। लेकिन यूट्यूब, रंबल को कहां रोक लोगे आप? ओडिसी को कहां रोक लोगे आप? QYIP.in को कहां रोक लोगे आप? ट्विटर भी चला रहा है, फेसबुक भी चला रहा है। फेसबुक और ट्विटर हमारे उस कंटेंट को चला रहा है जिसको तुमने टर्मिनेट किया। हम तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले नहीं है। यूट्यूब बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, बड़ा, और हर हालत में देश की पूरी जनता हमारे साथ है और देश को विज्ञान से अवगत कराएंगे। और 25 मार्च को मुंबई में इसकी बुगल बिगुल फूकी जाएगी। चुनौती है तुम्हें, रोक सको तो रोक लो। सरकार ने आज घुटने टेक दिया, चलाओ। हम लोगों की लड़ाई के सामने आज नोटिफिकेशन आ गया, हमारे मित्र अभी फिरोज जी बताएंगे। लेकिन आज इसके बहाने, इस कोरोना, इस पेंडेमिक के बहाने, अच्छा है कि तुम्हारे हर कुकर्मों पर अब हमने चर्चा की शुरुआत कर दी है। तुम किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहते हो, कभी आर्म्स डीलर के जरिए, कभी ड्रग माफिया के जरिए, कभी फार्मा लॉबी के जरिए, कभी फाइनेंशियल माफिया के जरिए, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। तो आज स्वागत कीजिए हमारे साथ फिरोज मीठी बोरवाला, और मॉस्को से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेबनी जर्नलिस्ट है मॉस्को से अकीला अहमद। आपका भी स्वागत है अकीला। और एक डॉक्टर और जुड़ेंगे हमारे साथ, डॉक्टर मुफस्सिल भी शायद जुड़ने वाले हैं मुंबई से, शायद जुड़ गए हैं डॉक्टर मुफस्सिल। बहुत स्वागत है डॉक्टर मुफस्सिल। लेकिन इसके पहले कि आप तीनों से हम चर्चा की शुरुआत करें आप तीनों से, अकीला आप अपने सेटिंग्स में कुछ ठीक कीजिए। आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा है, आप हॉरिजॉन्टल हो जाइए, आप अपने स्क्रीन को रोटेट कीजिए अकीला। रोटेट योर स्क्रीन अकीला, रोटेट योर। Akila, are you listening me? Oh, sorry, I got confused. Now I have to speak with you in English. Sorry, there are two speakers, yes, you're fine two now, panelists. Yeah, now you are okay. Akila, you are okay. Before starting the debate, I would like to show you some video. This video is 22 years old.
This is the video of 1981, and it's a clip of a movie. But it will give you a sense that what they were planning in 1981 and exactly happening in 2022. And for last 2 years, it has been scripted. And now the whole result is in front of you. So please watch this video. It is a small video. Please bear with us for 2 minutes 30 seconds probably. And please you listen carefully. Then we shall start our discussion. So can you please, Mayank, can you please, Akila on the screen? World's problems. The energy crisis here in the United States was exceptionally successful worldwide. Can you please little Success with our upcoming volume. food shortage. Yeah. Yeah. Our labor leaders have made great progress by causing confusion and work stoppages in all areas of the world. I'm with you. Yeah. Financially, the dollar is being devalued even faster than we could have hoped. Politically, the public has lost total confidence in any form of government. The threat of universal war is a daily possibility. As you know, we ourselves do not need to hold any visible office of leadership. As a matter of fact, it's better that we do not. We control the finance, news media, food, transportation, energy. We control everything. It is important that you, as world leaders, keep our program before your countrymen. With our World Bank computer program operational, we now have the capacity to control the financial affairs of every human being on Earth, giving each person his own computer number. Anytime his number is used, we would know his financial situation at once. He could not buy or sell anything without his computer number. It will simplify their lifestyles tremendously. The end result will be a one-world monetary and government system that we alone will control. Yes. What about the people who forget their number or their cards are lost or stolen? We've made provisions for that. By using this laser imprinter, we can painlessly and permanently affix the person's number to the back of his hand or his forehead if he so desires. The numbers would be easily read by this new ultraviolet scanning equipment. For the purposes of demonstration, I've had such a number imprinted on myself. Once this number is imprinted, it cannot be lost nor can it be changed. Now, are there any questions? What about the individuals who refuse to have this number implantation? We expect some minor resistance. The people's minds to accept our solution. Akila, we were showing some video which was revealing the fact that how technologically they will capture the whole world. There are handful people who are willing to capture the whole world. They are capturing financial institutions and political establishment. Literally, they are saying that political establishment of respective states, they are completely dysfunctional. And people don't trust political establishment. So they control World Bank, they control technology, they control research, patent. So they are saying that they are the real masters. And these real masters are basically from West and the European nations, Britain, US, and their other counterpart. Other So satellites. I am starting discussion with you. Can you please elaborate that this video is 42 years old, 41 years old, and the same is happening now. Technology giants are controlling us. That means that it took them 41, 42 years to accomplish their goals, but they didn't success. The proof that we are talking to you now, they didn't success.
They did not. Okay, you They are did saying not. that they didn't succeed. They didn't succeed, but they are still trying. The proof that they didn't succeed, that we are talking to you about them now. We are Okay, talking to you from different continents and countries, thousands of miles away from each from other, but they are still trying. They are using more efficient tools and weapons, but we are trying to overcome them. We are trying so how come you, Akila, since you have been a journalist, how come you say that they are not succeeding in their plan and action? If How come you they say? succeeded, I didn't say that they don't have successes. They have successes, but they didn't succeed permanently. They didn't succeed to the end. They were still trying to put pressure on us, on all free people in the world. But every time we are improving, innovating new techniques to overcome their attitudes, their aggressive movements towards us. So, and we should continue. We should continue this strategy. We should continue to improve our technologies also. Technology is not, they can't put technology in prison. Our scientists, our talent, young people also, they are learning everything that can make some alternative ways to contact, to prove ourselves, to say our words. No, I contradict you. Before going to other panel, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज मैं दो मुद्दे पर डिस्कशन कर रहा हूं इस कार्यक्रम में। एक मुद्दा है हमारा कि कौन हमें कंट्रोल कर रहा है फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली और दूसरे चीजों से, जो सुपर पावर्स हैं उनका जो लीक है। दूसरा हमारा मुद्दा है जो आज हमारे सरकार ने जो वापस लिया है आज मैंडेट को, जो ये फ्रॉड चल रहा था इतने दिनों से, और जो सरकार की बंदिशें थी, जो सरकार जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही थी, आज जो वापस लिया है उस पर बात करेंगे। लेकिन फिरोज भाई और मैं डॉक्टर मुफस्सिल से आग्रह करूंगा थोड़ा सा वेट कर लें, बिकॉज मैं इनको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये दोनों मुद्दों पर अपनी नजर बना करके रखिए। पहला जो हमारा सेगमेंट है वो कंट्रोलिंग पर है और वो इससे मिला जुला है जो मैं अभी बात करने वाला हूं। तो Akila, I am just contradicting your argument. See, how Indians are being completely compromised. I am telling you. I am giving you two examples. Okay. Government of India gave Padma Shri. This is the third highest award, civilian award, to two technology giants. One is Google CEO Sundar Pichai, and the other is Microsoft CEO Satya Nadella. And there is a direct conflict of interest. Yes, I agree with you. I agree with you. But we should struggle. We should struggle with them. We should struggle with these strategies, with these policies. We don't have to surrender. If we believe that they have succeeded, and we should surrender for them and to be their slaves. We don't want to be their slaves, so we have to struggle against them. We have to struggle in any way. I'm giving you one example what these technologies are doing, the technology companies are doing in Russia. Yeah. What they did in last 28 days. In last 28 days, they did very big problems. They very big disasters in the media and telecommunication fields and systems. You know that Facebook or Twitter or WhatsApp are malfunctioning. Even the whole internet systems are suffering from these problems.
the internal internet environment should be protected, even at least the governmental and all things that are related to the everyday's life of people and their communications and their documentaries and something like this. They are under danger now. But Russians, they should find alternative ways. I heard also that about GPS system won't be functioning in Russia, and So Russians do you have your own operating system, Akila? Do you have your own operating system? See, the China never yes, allowed yes, never allowed these technology giants. I am not naming anyone. You know better. yes, China never allowed. yes. But can you please tell us that Russia is having its own operating system? They have the GLONASS. They have the GLONASS. It's the Yes. alternative system of GPS, To Jeep. but it's not well shaped, and it's not proved to be good functioning because it has no experience in the Why? operating Why? system. Why? Akila, why? Akila, why? We need today answer. Why? Because we are we have learned Because that there are some Russian mafia too. Yes, Some Russian mafia too collided with Western mafia. Right. We are late. We depended on GPS systems and the Western systems, and we left our own national technology systems with that we should have been improved them before this catastrophe. But never too late. We can get follow up with all technology systems and we improve them. We have the capability. Yes. See, In the fact, champion of Ashutosh ji, humanity. Yeah. Would you like to come in? Yes, yes. Aye, Firoj bhai, Actually, boliye, please. What essentially saying and what you're agreeing with is that now the global freedom struggle against the Western Empire and against Zionism has now the shed is now. These are the two watershed. 2015 is when Putin and Russia again, emerged as a global power, and Western Europe and North America had to take notice of Putin, whom they were treating paria because of Crimea. Now, what happened post Ukraine is that Russia had already, along with China, developed its financial. Firoj I'm bhai, not hearing Feroz. Firoj bhai, your voice is coming. Some disruption in your voice, some connectivity problem. Can you please? Can I shut my video and talk to you all? Is it okay? It might be a minute. No, please go ahead. Okay, go ahead. Hello, can you hear me now? No, yes, yes. Yes. What I'm saying is basically the two important periods. One was in 2015 when Russia entered, and again Russia becomes a global power, challenging the West. And now in 2015, Afghanistan post-Iraq phase, Russia taking a very clear position against NATO and Empire, and they were prepared for it financially. The name that we should really be is Sergei Gladziev, who's the chief economic advisor to Putin, and he has been advising Russia how to counter sanctions for the last 10 years, and that is why Russia has massive gold reserves now. They were moving away from dollar and other European currencies and depending on the gold and their financial reserve. Now the point is, two important things have happened in the last month or so. Number one, China and Russia have developed their own economic counter SWIFT banking system. This by America, London, Paris. Okay. And the second thing is that I think I sent you the link also that Russia has now moved out of Davos, out of the World Economic Forum. And I think more importantly, in context of the next discussion, that the WHO
medico pharma dictatorship that is being imposed, where it should control by Gates, and Bill Gates becomes the de facto president of the world. Yes. In fact, in India, now to come to your the breaking news part, today the government of India has been forced by Awaken India movement and by the Indian Bar Association, and our team, Amber, Johan, and our team, to actually withdraw the National Disaster Management Act of 2005. And I'll tell you why they did it. Yesterday, the Maharashtra government has been checkmated for the last 2-3 months. Actually, the Chief Justice of Bombay High Court should have given a stay order way back in December. But one way or the other dragging along. Yesterday, it was so ridiculous. Now there's a third lawyer who has come, Mr. Kamdar. See, the other two lawyers, Solicitor General, Mr. Atonkar, Senior Counsel, all ran. Yesterday, the Maharashtra government that to protect the Mumbai and Maharashtra, we are separating vaccinated and unvaccinated. We said, give us the data. They said, we have the data, we have the file, we'll bring it tomorrow. And then the ICMR RTI, where the Can ICMR you please speak in Hindi for Indian viewers, Firoj Bhai? Because this information Indian viewers needs to know. Indian viewers absolutely need to know. Yeah. Okay, fine. साथियों, बात ऐसी है कि जो ऐतिहासिक केस अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथी आशुतोष भाई जैसे ईमानदार पत्रकार, नीलेश ऊर्जा जैसे वकील, ये सभी ने मिलकर जो जीता है, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक केस है. जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो 2005 का एक्ट है, तो एपिडेमिक को लेकर जो लॉकडाउन, मास मैंडेट्स, वैक्सीन इंपोजिशन, ये जो सब हम पे इम्पोज, आज भारत सरकार, सेंटर मजबूर हो गया था उसको विड्रॉ करने के लिए. और उसमें मैं आपको 4 बता देता हूँ. जो अगस्त में हम लोगों ने केस किया था मुंबई में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो प्रशांत भूषण कॉलिन दिल्ली में लगे, जेकब पुलियल वाला मैटर, तो हुआ था क्या कि जब ट्रेन पे बंदिशें आ गई, बमन वैक्सीन लोग नहीं ट्रैवल कर सकते, तो बहुत सारे लोग मजबूरी में उन्होंने वैक्सीन लेना शुरू किया, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था. ट्रेन ही तो मरोगे आप, 5 घंटे मरोगे बसेज और परीक्षा में. तो उसके बाद चलता रहा 2 महीना तो सुनवाई नहीं हुई. 3,500 लोगों की ईमेल तक क्लियर हो गया, सरकार के पास उसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था, ये तो सेंटर ने भी बोला मैंडेटरी नहीं है, हम लोग इम्पोज नहीं कर रहे और हम लोग सर्विसेज के साथ लिंक नहीं कर रहे. ये तो आप बोलिए, मगर ग्राउंड सिचुएशन आपके कलेक्टर, तहसीलदार, दुनिया भर के ऐसे लेटर भेज रहे थे, स्कूल कॉलेज नौकरी करने वाले लोग के, अगर पैसे बना रहे थे, पैसे कमा रहे थे, लूट रहे थे, देश की आवाम को लूटा इन्होंने. 2 साल लूटा है और ऊपर से लेके नीचे तक इन्होंने लूटा है. टोटली. तो हमारे पेटिशन, जो पेटिशन उन्होंने, मास्क फाइन से आपका इलीगल है, क्योंकि आपके रूल है, आपके गाइडलाइन है, नहीं कर सकते. मेरा केस महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर पे है, मोदी है, कि आप कर ही नहीं सकते. ठीक है. दूसरी बात कि हारते लोग ये कि लोग बोले नहीं ये ट्रेन का तो चलेगा भाई, बॉम्बे पूना आप जा सकते हो, कोई दिक्कत. बॉम्बे के बम्बई आपकी ट्रेन, लोकल ट्रेन नहीं चल पाएगी, जिसमें ये लोग ने ये जो पूरा स्टूपिडिटी करके रखा. कल ये बोलते हैं कि वैक्सीनेटेड लोग सेफ है, अनवैक्सीनेटेड लोग फैलाते. हम बोला हमको डेटा, आईसीएमआर का आरटीआई दे दिया. आईसीएमआर का डेटा बोलता है, आरटीआई बोलता है उसका वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड क्या फर्क है, हमारे पास उसका कोई रिसर्च नहीं है. तो बिना रिसर्च डेटा आप जो हम पे, पूरे भारतीय समाज पे लाद रहे हो, पूरे देश पे अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम. तो स्टेट गवर्नमेंट का काउंसिल बोलता है कि कल हम आपको डेटा देंगे. जो आईसीएमआर के पास डेटा नहीं है, हमारा वकील बोल रहा हमारे पास डेटा है. हम तो समझ गए थे खेल खत्म. मगर कल आप देखोगे कि सेंटेट और जो कोर्ट है, तीनों के अंदर कुछ ना कुछ बातचीत. जो हियरिंग 2:30 बजे शुरू होनी चाहिए थी, वो 3:30 बजे शुरू हो. तो कोर्ट में बैठे थे, क्या हो रहा है. जज आके बोलते हैं कि कल जो सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की ऑर्डर है, तो हम यहाँ वैक्सीन का मुद्दा पर अभी सुनवाई नहीं करेंगे. हमारे वकील बोले ठीक है. तुरंत मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब मैंडेट विड्रॉ कर लिए हैं, तो अभी हमको भी मैंडेट लादने की कोई जरूरत नहीं है. 31 मार्च से सपोर्ट ऑप्शनल होगा.
मैंडेट खत्म हो जाए। ये हमारी जीत थी, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डायलॉग, भाई हम लोग हार जाएंगे मैटर, महाराष्ट्र में हारे, हर स्टेट में हम लोग हार गए, सेंटर हारेगा, इसको उनको अवेकन इंडिया मूवमेंट और आईबीए को नहीं, इनको डायरेक्ट जीत नहीं मिलने चाहिए, तो गवर्नमेंट हर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होने वाला है। तो आज दोपहर को 1 बजे, 2:30 बजे हमारी 1 बजे सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट आज रिलीज हुआ है, सुबह से चालू हो गया था कि 31 मार्च से मैंडेट हट जाएंगे, हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई, वो जीते। और चीफ जस्टिस ने बोला कि आपका जो आपने जो कंपेंसेशन डिमांड किया है उसकी इलीगैलिटी को आपने चैलेंज किया है, वैक्सीन इंपोजिशन पे, कोर्जन पे, मैंडेट पे 5 अप्रैल के बाद उसकी हियरिंग हमारी चलेगी। पॉइंट इज के जो अगस्त से हम लोग ने बम्बई हाईकोर्ट में और कुछ तो पहले सुमोटो ले लिया था, मणिपुर, गुवाहाटी वगैरह वगैरह ने, तो ये समझ चुके हैं जनता का सपोर्ट होगा, ईमानदार पत्रकार होंगे, आंदोलन आप करोगे और कोर्ट में लड़ोगे, तो ये संविधान है, ये कानून व्यवस्था है, अगर उसके परे जाएंगे तो वो भी जेल जाएंगे, मिनिस्टर भी जाएंगे, ब्यूरोक्रेट भी जाएंगे। ये ताकत बम्बई हारे, जेल भेजना है, जेल भेजना है, इन्हें जेल भेजना है, इन्हें जेल भेज के ही रहना है। और ये देखते हैं कि कहां यूट्यूब का सहारा लेगा, कहां फेसबुक का सहारा लेगा, कहां ट्विटर का सहारा लेगा, इनको मालूम नहीं है। परसों शुरुआत हो रही है, करना, बैन कर दो, ब्लॉक करो, टर्मिनेट करो, आशुतोष भाई करो टर्मिनेट। आशुतोष भाई और एक बात है, आशुतोष भाई और एक बात है कि एक न्यूज आई थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक नया स्वरूप बिल पेश होगा। हाँ, होगा, हाँ, और उसको पास करवाने की बात है, पास मगर ये चैलेंज के बाद जब 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होकर आज उन्होंने वापस ले लिया है, तो आज उनको सोचना पड़ेगा कि अगर इस पर कोई बिल लाने की बात है, डिजास्टर एक्ट का कुछ घिनौना स्वरूप आएगा, तो हम उनको भारतीय तो किसान आंदोलन होगा, तो फिर किसान आंदोलन होगा, इस बार जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, क्योंकि ये देश और एक लॉकडाउन नहीं भुगत सकता, ये देश और एक लॉकडाउन नहीं, या आम आदमी मर जाएगा बेचारा। हम सब बहुत देर से डॉक्टर मुफस्सिल वेट कर रहे हैं। अकीला, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, प्लीज वेट फॉर ए सेकेंड, प्लीज वेट फॉर ए सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू माय अनदर पैनलिस्ट, डॉक्टर मुफस्सिल is waiting for a long and he will indeed answer in Hindi, so I'm extremely sorry, please bear with us. डॉक्टर मुफस्सिल ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो फार्मा लॉबी है, ये फार्मा लॉबी WHO के पीछे से, WHO का कान पकड़ करके उनको घुमाती है, चक्री घुमाती है, और WHO अपना कारनामा दिखाती है, और इस कारनामे को क्या, जैसे अलेक्जेंडर को भारत ने रोक दिया, हालांकि एक अकाउंट आया है कि अलेक्जेंडर नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, ये तो अब नया हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे अलेक्जेंडर को भारत ने पूरी दुनिया का विश्व विजेता बनने से रोका था, डॉक्टर मुफस्सिल, क्या लगता है आपको ये गेट्स का प्लान उनके बेईमान दोस्त जो राज्य हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देश, इंग्लैंड में तो हो जाएगा, भारत में नहीं होगा? डॉक्टर मुफस्सिल बोलिए, क्या उनका प्लान होगा सक्सेस या नहीं होगा? नमस्कार आशुतोष जी, नमस्कार। सीधा जवाब है कि बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जैसे मैं अली साहब से भी अग्री करूंगा कि दे हैव नॉट सक्सीडेड, दे माइट हैव वन देयर बैटल, देयर वॉर्स, बट दे हैव नॉट वन द बैटल। ओके, सॉरी, दे हैव वन द बैटल बट दे कांट विन द वॉर, क्योंकि हम जैसे लोग अभी जिंदा है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है, ये साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है ऑफ फ्री माइंड। ठीक है, आपको भी पता है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए लोग और ये जो भी जितने भी संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, वो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, ये कहीं से पढ़ लिख के नहीं आए हैं कि इनको ये सब चीज का अवेयरनेस आना चाहिए, ये नेचुरली आया है। सो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ माइंड है ना, ये साइकोलॉजिकल स्टेट है।
ये आपका कैरेक्टर दिखाता है, ये आपका एटीट्यूड दिखाता है। आज भी क्यों इतने सारे डॉक्टर्स, स्पेशली मैं होम्योपैथ्स को हमेशा हैमर करूंगा, क्यों आज तक सब लोग चुप बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, दे आर जस्ट टेकिंग इट लाइन डाउन। ओके, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है, ये आपका कैरेक्टर दिखाता है, ये आपका एटीट्यूड दिखाता है। तो जब तक हम जैसे लोग जिंदा है, फिरोज भाई जैसे, हम जैसे लोग, योहान है, नीलेश जी है, तब तक ये लोग कभी सक्सीड नहीं हो पाएंगे। इस मामले में मैं अहमद जी से अग्री करता हूँ। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, कोई भी षड्यंत्र है, कोई भी कॉन्स्पिरेसी की जो प्लानिंग होती है, आप ब्रिटिश रूल देखो या कॉलोनियलिज्म देखो अक्रॉस द वर्ल्ड, ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होती है जब तक आपको कोई इंटरनल हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि जब तक अंदरूनी इंटरनल हेल्प नहीं मिलती तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मोल है, जैसे हमारी सरकार है, जो जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, सेंटर कोर्ट में कुछ और बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ और लागू करती है। ठीक है, यहीं पे इनकी हिपोक्रेसी दिखती है। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि ये पिटने वाले, जैसे फिरोज भाई ने अभी बहुत अच्छे से कहा कि इनको पता है कि आगे जाके इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और ये भी नहीं दिखाना चाहते कि हम जीत जाए, तो ये फिर यू टर्न मारते हैं। आप देखोगे WHO से लेके, इजराइल से लेके, मैं इजराइल का नाम हमेशा लेता हूँ क्योंकि वो सबसे आगे वैक्सीनेशन में, प्रोग्राम्स लॉन्च करने में, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सारों ने 2 साल में यू टर्न मारा है, हर चीज पे यू टर्न मारा है। वैक्सीनेशन के मैंडेट्स पे यू टर्न मारा है, मास्क पे यू टर्न मारा है। पहले बोल रहे थे कि वैक्सीन इन्फेक्शन अवॉइड करेगी, वो प्रूव नहीं हो सका, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ओमिक्रॉन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये करते करते आज ऐसी हालत हो गई कि 2 साल में इन्होंने जो भी कहा है, इन्होंने अपनी मुंह की खाई है, तो इन्होंने यू टर्न मारा है। और वो यू टर्न इसलिए क्योंकि हमारे सारे लोग बिके हुए, ऊपर से नीचे तक सब, मेडिकल फ्रेटर्निटी तो माशाल्लाह सालों से हमको पता है कि वो पूरा फार्मा ऑपरेटेड है। ठीक है, ये ड्रग प्रैक्टिस है या फार्मा के प्रिस्क्रिप्शन है, ये सारा कमर्शियली ड्रिवन है। इसीलिए आज मेडिकल फैसिलिटीज की इतनी बुरी हालत है, वो इस वजह से ही है। तो जब तक हम इंटरनल मोल्स को नहीं दूर निकालते, जब तक हमारे ही लोग हमारे साथ में आते, और इसमें सबसे बड़ी ताकत लोगों की है। देखो आज हम कितने मुट्ठीभर लोग हैं जो इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन जब तक मास हमारे साथ में नहीं आएगा ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जहां तक डॉक्टर मुफस्सिल, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आपने इजराइल की चर्चा की, लेकिन इजराइल तो ठीक है पॉपुलर सेंटिमेंट के साथ गया, लेकिन इजराइल वो सबसे पहला देश था जिन्होंने सार्वजनिक रूप से, उनके डॉक्टर्स ने माफी मांगी कि हमने लॉकडाउन लगा करके, स्कूलों को बंद करके गलती की है। उनके रिसर्च आए, ओमिक्रॉन के समय में उन्होंने कहा कि सारे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, एंड ओमिक्रॉन हैज बिकम अ नेचुरल वैक्सीन। नहीं जी, मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल दे रहा था, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि इजराइल ने भी यू टर्न मारा है। तो इन्होंने सारे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ना आप, अभी जैसे आपने जो वीडियो दिखाया उसका अगर हम कोरिलेशन देखते हैं कि डॉक्टर बीआरसी के बुक में ये उन्होंने सारे सबूत दिए हैं कि जो 1981 में HIV का ड्रामा हुआ था, ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। और अगर आप फार्मा स्टोरी को ट्रैक करोगे तो वैक्सीन एक ऐसा टूल है जो इजीली इंप्लीमेंटेबल है, क्योंकि आई एम श्योर अभी इतने सालों से इन्होंने ये सब प्लान किया है, तो उसमें उनको शॉर्टकट तो ढूंढना था ना। तो इनका शॉर्टकट, ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। तो इनके शॉर्टकट्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब इनको इंटरनल हेल्प मिलेगी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर पॉजिटिव हूँ कि इनका प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन मैं नेगेटिव साइड में ये भी सोच रहा हूँ कि जब तक हमको मास सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोग इसको अवेयर नहीं होंगे, तक ये सक्सेसफुल। लेकिन डॉक्टर, ये इस बार का जो गेम है वो सिर्फ डॉक्टर का गेम नहीं है डॉक्टर, इसलिए मैंने कहा कि ये टोटल कंट्रोल, ये जो आज मेरे विषय का जो मेरा विषय है डिस्कशन का, ये टोटल कंट्रोल का विषय है। एक बात को समझना पड़ेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी जायंट्स ने एक प्रकार से कब्जा कर लिया। जो वीडियो 1981 में कह रहा है कि पॉलिटिकल क्लास के बारे में हर देश में
कोई साख बची नहीं है उनके बारे में। लोग बहुत गलत करते हैं, और जब सारे टूल्स हमारे पास हैं, फाइनेंशियल टूल्स हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हमारे पास हैं, तो ये कौन है, हम रूल करेंगे और हम देखेंगे। तो वो मैं कह रहा हूं कि ये उसमें सक्सेस हो पा रहे हैं क्या, ये तो एक बहाना है। मेरा आशुतोष जी, मेरा बोलने का पॉइंट ये था कि मैं सब मानता हूँ, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के बगैर, टेक्नोलॉजी एक टूल है। आज भी देखो, जैसे हम उस दिन जो एलोपैथी वर्सेस अल्टरनेटिव मेडिसिन का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें भी आप देखो ना कि टेक्नोलॉजी किसने यूज की है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे। मेरा बोलने का मेरा मतलब ये था और पॉइंट ये था कि इन्होंने हेल्थ को टूल बनाया, क्योंकि क्या है ना, ये ना फियर मैकेनिज्म है ना। आप डर किस चीज का पैदा कर सकते हो, आतंकवाद हो गया, खत्म हो गया, लोग बोर हो गए। अब मुंबई के ट्रेन में देखो, कोई डरता नहीं है ट्रेन में ट्रैवल करने को। जब बॉम्बे ये टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसके बाद से लोग अपने नॉर्मल जिंदगी पे चले गए। लेकिन हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है, जैसे देखो ना, आप बच्चों के कपड़े क्यों इतने महंगे होते हैं, क्योंकि माँ बाप का इमोशन जुड़ा होता है, वो आगे पीछे नहीं सोचते खर्चा करने के लिए। सिमिलरली जब हेल्थ का इश्यू आता है तो लोग डर जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने ये फियर को, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन्होंने हेल्थ को एज अ टूल यूज किया है। इनका पूरा weaponize health now. Health has been weaponized. Yes, अब मैं इसको इसी हेल्थ को अब थोड़ा सा लेके जा रहा हूं यूक्रेन और रशिया के तरफ। अकेला भाई वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं फिरोज भाई आपके पास, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट करना चाहता हूं। अकेला, we were discussing that through the health hazard and health facade, they were trying to control the whole world, and to some extent, not to the greater extent, they got success. They got success to the greater extent, and now who are doing the first war? I didn't get it. Who they are? I am telling you. Yeah. These people are some technology giants, some pharma lobby, big pharma mafia, in connivance with technology giants and financial giants. They just did kind of homework. And to the greater extent, they got the success in their plan. Now I am coming to you. See, Russia has been a big power. And Russia was always giving check to the West. My question to you, why Russia did not develop their own operating system, their own technology to at least counter them? Look at China. China did this, but Russia didn't. India can, but India didn't. India is having its own operating system, both Bharat operating system, but nobody knows in India. Why I'm talking about operating system? Because that is the mother problem of every issues nowadays, because everything dependent upon technology. So we are not technology dependent. We were in the 1960s and 70s, we at least we overcome on hunger kind of an issue. Green revolution, we did green revolution. We did milk revolution. Somehow we did industrial revolution within our capacity, but we are technologically highly dependent upon them. And it is a complete calculated way. It happened in calculated way. So I am just trying to get the sense from your side that what Russia did. Actually, the status of Russia is very similar to the status of India. We know about few collaborating joint projects between India and Russia, especially in the military technological fields. This is a good thing. We should just evaluate positives
things and the negative things that we couldn't develop it, that we couldn't do it because of one thing, that we surrendered to the rules of the market, the rules of the market, of the hegemony market, of the globalization market. Russia, after the collapse of the Soviet Union, agreed to be a part of the globalism. And it's her own mistake. And after years and years of suffering, and the Russian technology, the Soviet technology, was much more developed and up to date, and can challenge with Western technologies. But after this disastrous collapse of the Soviet Union, the degradation has started dramatically. And exactly in the 10 last years, just the director of Putin's ruling, and started to accumulate technologies and accumulate power and accumulate financial resources to start this confrontation, because he knew that will come a day where we should be separated from this globalized system, and we should be separated from this hegemony system. So the capacity is it's here in Russia, it's available. But still, till now, after this war has started, some people, maybe they think that it's a matter of a few days or few months or some period of time, and everything will go back to its old normal stage. Yes, before the military operation, before the war. I say no. Once we started this confrontation, we have no way back. We should depend only on ourselves. The next year will be more difficult than this year. You know, the Ukrainian military forces has put a lot of sea mines in all the ports of the Black Sea, and the, how do you call it, Chechnya, the water flows has took all these mines toward the open sea, and this makes the Black Sea affordable for transport shipments. So this means the next year will be no seeds for agriculture, no ferments for agriculture, no products for this, and the products of next year will be very slow, very difficult. So the problem that we should yeah, the problem, just let me just finalize. The problem that we should wait next year is more dangerous than the problem of this year. And if we don't take at this time very brave decisions to integrate our efforts with Russia, India, China, and other countries that are also suffering from the hegemony of this globalization of United States, we will lose this battle. So we should collaborate our efforts. India, Russia, China. Yes, you are right that China has developed a lot of operational systems, but even China, they have a very big lacks in their own economy and their own technological systems, that they are depending on this global system also. So even China should take the decision. Till now, China hasn't taken the firm decision. They know that after Russia
it's their own turn. After Russia, it's India's turn, China's turn, and other countries' turn. So if Russia withstand this attack, can defend the whole normal world. But this normal world should start now, never too late. We should operate together to improve our joint operating systems in all fields. Right. But I would like to ask you one more question, very specific question, Akila. That for all these technological mess nowadays Russia is facing, would you say that the Russian oligarch, few Russian oligarch, basically they are responsible for this? Not it is Russians and the common citizen of Russia. It is they who are actually responsible. Yes, it's right. It's right. This oligarchism that ruled Russia from after the collapse of the Soviet Union is responsible for all these catastrophes that we are facing now. If you remember, President Putin has told all these oligarchs that they put their own assets and money outside Russia. He told them, bring your money back to Russia and start investing in your own country, and I'll just close my eyes for all your past faults towards all taxes and some else. But they didn't hear from him. Now these oligarchs, they are under sanctions and under attacks of the Western Union. Their own assets are under control of the United States and European and Western countries, Western powers. So who was right? They lost everything. They lost everything. These oligarchs, these businessmen that they heard from Mr. Putin and they brought their own assets to their country, to Russia, they succeeded. They just saved their own assets. Now I heard the news also that I told you about it last time. Mr. Putin, President Putin took the decision to exchange gas and oil and petrol products of his own country with not with the currencies of these unfriendly countries. So who are the unfriendly countries? All European countries except few of them, at Serbia, I think, and a few of them, maybe Greece. And if they want to use euro, no, excuse me, bring me ruble and I'll give you my oil and buy gas. Okay? They should find the way to buy rubles, to buy the Russian oil and gas. This is a good decision, I think. But okay, it's not enough. We should see that how Putin is handling with Russian oligarch. So I am just putting the same question to my other panelists, Firoz Bhai and Dr. Mufassil. Dr. Mufassil and Firoz Bhai, दोनों में से जो आप आंसर करना चाहते हैं, ये बताइए कि भारत का जो ओलिगार्क है, ये जो बेईमान बिजनेसमैन है, जिन्होंने स्विस बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, जिन्होंने भारत के खून को लूटा है, जिन्होंने भारत में 34 रुपए कमाने वालों की एक भीड़ पैदा कर दी है, 40 करोड़ लोग 34 रुपए कमाने वाले हैं पर डे, और जिन्होंने इस डेस्पेरिटी को बढ़ाया है, जिनके 2 साल में, पिछले 2 साल में पूरी दुनिया लूट रही थी, अब पिछले 2 साल में इनका जो पैसा था, इनका जो एसेट था, वो हजार सैकड़ों करोड़ डॉलर, सैकड़ों करोड़ रुपए पर घंटे के हिसाब से बढ़ रहा था। तो इन लोगों ने, इन बेईमानों ने
हमारे बेस्ट ब्रेन को, बी इट इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ और इन टेक्नोलॉजी, दे जस्ट एक्सप्लॉइटेड आवर बेस्ट ब्रेन, दे मेड देम स्लेव। इन्होंने उनको स्लेव बना दिया और उनके दिमाग को खोला नहीं। आज उनकी वजह से आज आपका कोई आत्मनिर्भर, अब हमारे प्रधानमंत्री, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। कौन सा आत्मनिर्भर भारत? इन्फोसिस का, टीसीएस का, विप्रो का आत्मनिर्भर भारत, जिन्होंने जिन्होंने ऑपरेटर बनाए, सारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बनाया, जो इनके 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 अमेरिकन कंपनी के लिए हमारे बच्चे यहां पर काम कर रहे हैं, अमेरिकन कंपनी के लिए हमारे बच्चे ऑपरेटर बन रहे हैं। द बेस्ट ब्रेन्स आर बिकमिंग ऑपरेटर, नॉट इंजीनियर्स। हमारे डॉक्टर्स इनके दलाल बने हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिरोज भाई ये बताइए कि जैसे रसिया की हालत हुई है, जैसे रसिया की हालत, और यही कमोबेश चाइना की भी है, लेकिन चाइना ने अपने को एक आयरन गेट में बंद किया हुआ है, तो वो कोई खबर को न बाहर जाने देता है, न आने देता है, तो उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन वेस्ट के नैरेटिव में पूरा भारत फंसता जा रहा है। फिरोज भाई बोलिए, फिर मुफस्सिल जी बोलेंगे। आज की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है अकेला। टुडे सिरिल रामाफोसा, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, has said that South Africa nor Africa is going to come into the Western plan to target Russia. Okay. Yes. So even Africa has taken a position, and it is fantastic, despite the economic burden on Africa, on India, and on other third world countries, Venezuela and Bolivia and all these countries. Nothing will happen. They must stand up. Nothing will happen. Their sanction, उसका sanction का कोई मतलब नहीं है. Because we are a market. We are a buyer. तुम बेचोगे कहां माल को? हम खड़े हो जाएंगे. We are the market. We have the power. We have the technology. We have the resources. We have everything. The manpower. Yes. We have the brain. Yes. But they are controlling us. Why? Why should we surrender for them? Yes. Right. Yes, Firoj bhai, बोलिए. Firoj bhai? Yes, Feroz. Somehow Firoj bhai's link is somehow disconnected. Yeah, disconnected. Dr. Mufassil, बोलिए जरा. Meanwhile, he will be joining soon. हाँ. Yeah, so ये देखो, ये बहुत कैटेगरिकली इन्होंने प्लान किया है. ये कोई 1-2 साल वाला बात नहीं है. ठीक है, जैसे पीछे भी हमारे एक डिस्कशन में मैंने बोला था कि क्यों इंडियंस बाहर भाग जाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस है वो क्यों बाहर भाग जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो काम आता है वो सिर्फ बताया जाता है हमको कि क्या करना है. मैं फार्मा में काम कर चुका हूँ और टेक्नोलॉजिकल जॉब्स भी आप देखोगे, जैसे आपने राइटली कहा, कॉर्पोरेट में जॉब मतलब क्या, आपको सिर्फ बताया जाता है कि आपको करना क्या है, आपका अपना दिमाग यूज नहीं करना. तो इन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली हमारे एजुकेशन को इन्फिल्ट्रेट किया है, एजुकेशन सिस्टम को. जैसे मैं एक बहुत अच्छा स्कूलिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ. वहां पे बताए जाते हैं, तो आप कोई भी क्लास में, कोई भी एक एवरेज क्लास 100 बच्चों की ले लो, जब वो पास आउट होके, जैसे 12th पास होते हैं या ग्रेजुएशन पास होते हैं या इंजीनियरिंग पास होते हैं, वो जाने के बाद उनका टारगेट क्या होता है? 80% लोगों का टारगेट ये होता है कि मैं कोई जॉब ढूंढूंगा. उसमें से कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ अपना खुद का करूंगा, या मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मैं कुछ नया इन्वेंशन करूंगा? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इतने कैटेगोरिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम, मतलब हमारा जो रूट है, उसको डिस्ट्रॉय किया है कि हम बनाते नहीं सकते. स्टूडेंट्स को बनाते ही ऐसे कि वो निकले बस नौकरी करें कि मैं किसी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करूंगा, मैं किसी गूगल के लिए काम करूंगा. वो ये नहीं देखते. इसीलिए वेरी करेक्टली आपने जो टॉपिक लिया है, इन्होंने टेक्नोलॉजी को आगे रख के इसको कैसे इन्फिल्ट्रेट किया है, ये समझना बहुत जरूरी है. और इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं जो अहमद जी ने बताया, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान. जैसे इन्होंने बताया कि इनका अभी तो रशिया में नहीं दिख रहा है कि कोई इश्यू है,
लेकिन अगले साल में उनका इश्यू आने वाला है जो बोल रहे हैं कि इनके सीड्स नहीं मिलेंगे, ये एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कि ये कितना डीप थॉट है, ठीक है। ये सिमिलर सिचुएशन हमारी कंट्री में भी आने वाली है। अब हमको लग रहा है कि यार ठीक है, हम कुछ कोर्ट केसेस जीत रहे हैं, हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली 1 साल 2 साल में जो इनका लॉन्ग टर्म प्लान है ये सक्सेसफुल करने जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान में, फॉर एग्जांपल आज मास्क का मैंडेट्स लगा रहे, कल को बोलेंगे कि आप 4 पैरों पे चलो, झुक के चलो, खड़े रह के नहीं चल सकते आप। जो इंसान का सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दूसरे जानवरों से कि ये 2 पैरों पे चलता है, कल को ये भी ला सकते। तो ये सारा प्लान इनका आपको गुलाम बनाने का। आप कोई सवाल मत पूछो, आप सिर्फ आशुतोष जी, इसमें मैं खाली इतना ही बोल दूं कि हेलो कि आई थिंक लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इन रशिया एंड यूक्रेन। जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंडा था, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन करेंसी, वो रशिया और चाइना ने अभी खत्म कर दिया है। और चाइना समझ चुका है, इंडिया भी समझ चुका है। चाइना की स्पोक्स पर्सन बोलती है कि आज तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे दोस्त से दूर हो जाओ क्योंकि कुछ चंद सालों के बाद आप चाइना को अटैक करोगे। तो रशिया का नंबर है, चाइना का नंबर है, इंडिया का नंबर है, ठीक है। इसलिए भी मोदी जी की काफी पॉलिसी पे हमारा विरोध है, मगर ये टाइम पे फॉरेन पॉलिसी पे मोदी की सरकार और सभी राजनीतिक दलों ने सेंसिबल पोजीशन, प्रिंसिपली भी, मॉरली भी और स्ट्रेटेजिकली भी सही कदम उठाए हैं। और हम लोग अमेरिका के दबाव में नहीं जा रहे। वी आर बाइंग ऑयल एंड गैस एंड एवरीथिंग। आई एम सरप्राइज कि जो मिडिल ईस्ट में जो मोनार्कीज है उनको भी कहां से हिम्मत आ गई। मतलब किंग सलमान, प्रिंस सलमान बाइडेन का फोन नहीं उठाता, यूएई का राजा बाइडेन का फोन नहीं उठाता, बाहरीन आंख दिखा रहा है। मैं तो ताजुब हूं। मगर पॉइंट ये है कि दो इकोनॉमिक सिस्टम वाली वर्ल्ड बनने जा रही है। और मेरा ये बोलना है कि इनके षड्यंत्र तो है। उनको लगा था कि 2020 और 2030 तक वो लोग दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, बिल गेट्स का जादू चलेगा। बिल गेट्स 6 महीने के अंदर एक्सपोज हो गए थे, दुनिया में दर्दे मोर्चे निकल रहे थे, उसको पैकेज करके दुनिया में पेश किया गया था। बिल गेट्स हैज टू लीव इंडिया। यस, डॉक्टर फॉची एक्सपोज हो चुके हैं, वो टीवी पे नहीं दिखते, ना बिल गेट्स टीवी पे दिखते हैं। ये दुनिया की जनता ने लॉकडाउन किया, मगर हम लोग की दिमाग और हमारी आंखें खुल गई। आवर हार्ट्स, आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारे दिमाग खुल चुके। ये लॉकडाउन, उनको उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतना बड़ा फाइट बैक होगा। कहीं कनाडा का ट्रकर्स कर रहा है, कहीं भारत की जनता खड़ी है, कहीं पेरिस की जनता खड़ी है। ये है दुनिया की इंसानियत, मानवता की एक ताकत है, जो हमारी आत्मा की ताकत है, वो हम लोग ने करके बता दिया है। और वापस बोल रहा हूं कि एक छोटी सी ताकत अवेकन इंडिया मूवमेंट जो आज भारत के 7 शहरों में है, मगर जो सड़क पे लड़ाई और जो कोर्ट की लड़ाई है, आज हम लोगों ने भारत की सरकार, जो मोदी 4 बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर चुका है, जो ग्रेट रीसेट की बात कर चुका है, वो जो डेवॉस के कॉर्पोरेट से हमारी अडानी अंबानी, वो किसानों ने कहीं उनका हरा दिया है। और हम जैसे साथियों ने, हमारे वकीलों ने मिलकर और आप जैसे पत्रकारों ने लगातार ये सब बातें करके एक जागरूकता फैलाकर आज हम लोग ने WHO और बिल गेट्स के भी प्लान को एक्सपोज कर दिया है। तो आई एम सेइंग दैट वी आर ऑन अ विनिंग पाथ। हमारी मूवमेंट को और मजबूत कीजिए और जागरूकता फैलाइए और जनता को सड़क पे लाइए, और हम लोग ये पूरे दुनिया के षड्यंत्र को रोक पाएंगे। और वापस बोल रहा हूं कि जो रशिया के लोग जो आज त्याग दे रहे हैं, पुतिन कुड हैव सरेंडर्ड, बिकम पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो मेडवेडेव, जो एटलांटिसिस लॉबी है, दे कुड हैव बिकम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, बट दे डिड नॉट। रशिया हैज विथस्टूड। आज सर्बिया खड़ा हो रहा है, बेलारूस खड़ा हो रहा है। ये एक समझ जारी है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में। दूसरे अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलने लगे कि गलती हमारी है। अमेरिका के अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं गलती हमारी है। आप नेटो को उसके बॉर्डर पे लेके जाओगे, न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस करोगे, तो रशिया कब तक ये करता रहेगा? और एग्जैक्टली तो पुतिन ने और रशिया के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया को बचा दिया है। थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू अकीला भाई, थैंक यू अकीला अहमद, और थैंक यू डॉक्टर मुफस्सिल। डॉक्टर अकीला, I think that we should not surrender and they will not succeed. Yes. I can tell you that they will not succeed. As you rightly said, that we have manpower, we have population, we have market, we have expertise,
we have brain, we have intelligence, so we shall wake up. Therefore, we shall not surrender to them. And Firoz bhai, to aapka thank you very much, Akila from Moscow. Ashutosh bhai, एक little line for Akila. Ashutosh. Thank you, dear brother Ashutosh. Akila, tell the people of Akila, tell the people of Russia they are not Akela. Akela means alone. Okay. So tell the people of Russia that we stand with Akila, that the Russians are not alone, and the people of Lebanon, because I know you're Lebanese and the Lebanese resistance I've learned a lot from. Okay. So the people of India stand with the people of Russia. And my request is now, let's get some Russian-born, English-speaking friends along with you back on Ashutosh's channel very soon. And I believe that the government of India is moving with a very strong, good diplomatic gesture. And I believe that the government of India has shown the world that what India means for rest of the world. So thank you very much, Akila. What India is capable of. Exactly. Thank you, Ashutosh. Thank you, Aruz. Thank you, Dr. Mufassil. थैंक यू हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, उनके कंट्रोल करने के जो आदत है उनके सामने कंट्रोल नहीं, हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे और टेक्नोलॉजी में भी भारत उठेगा और इन टेक्नोलॉजी जायंट्स को सबक सिखाएगा। मैं भारत के इंजीनियरों से, भारत के डॉक्टरों से और भारत के विद्वान वकीलों से अनुरोध करता हूं कि आप कानूनी लड़ाई को लड़ते रहिए, हम जीतेंगे भी। आज मैं दर्शकों को दोबारा बता देता हूं कि अवेकन इंडिया मूवमेंट के जबरदस्त दबाव में सरकार ने सारा वापस ले लिया है, जो कोविड-19 का जो एक प्रकार से जो प्रोटोकॉल वगैरह है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इतने दिन से इंपोज था पूरे देश में, उसको वापस ले लिया है। अब राज्य सरकारें भी वापस करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई पूरी हो गई है। प्रशांत भूषण जैसे कानूनवेत्ता ने अपना तर्क रख दिया है और जजेस ने बहुत ही गंभीरता से उनके सारे पक्षों को ध्यान से सुना है और अब हम सब इंतजार कर रहे हैं, हम अपने न्यायालय की तरफ बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत के 130 करोड़ लोगों की आशा है भारत के न्याय व्यवस्था पर और मिलॉर्ड के तरफ हम देख रहे हैं कि मिलॉर्ड आप जस्टिस कीजिए, आप न्याय कीजिए। अगर गलत तर्क है तो वो भी बताइए और अगर गलत तर्क नहीं है तो हम आपसे, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। जो पिछले 2 वर्षों में जो माफियाओं ने किया है, फार्मा माफियाओं ने, बेईमान डॉक्टरों ने, बेईमान भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स ने, भ्रष्ट पॉलिटिशियन ने, उसके खिलाफ सिर्फ बेईमान मीडिया ने उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आप एक होप हैं, आप एक भरोसा है, आप एक न्याय के मंदिर पर हम लोग अपना सर पटक रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपसे न्याय जरूर मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है, आप सत्य के साथ निश्चित रूप से खड़े होंगे। ये मैं माननीय अदालत से, हम अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं कि आप सत्य को टटोलिए, न्याय को टटोलिए, विज्ञान को मरने मत दीजिए। विज्ञान के साथ समझौता हो गया है, आप विज्ञान को मरने मत दीजिए और आप विज्ञान को मरने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों पैनलिस्ट का। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।